ओके, लास्ट टाइम हम एनपीएन ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे थे और हमने कहा था कि इन ट्रांजिस्टर्स में 4 तरह के मोड्स पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर ईबीजे इज फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड एंड सीबीजे इज फॉरवर्ड बायस्ड or reverse biased. So one of the modes is called active mode, and active mode is the one achieved when emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased. So let's consider this figure. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि emitter based junction is forward biased and collector based junction is reverse biased. Why? Because you can see कि यहाँ पर voltages emitter के ऊपर हमने ground किया हुआ है, base के ऊपर 0.8 volts अप्लाई किया हुआ है, which means P type base is at higher voltage relative to the N type emitter. Similarly, CBJ is reverse biased because N type collector has higher voltage 1 volt while P type base has lower voltage of 0.8 volt. So इस situation में we have biased the transistor in active mode. So active mode में हमने ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में सेट कर दी है एंड लेट्स सी कि ये किस तरीके से चार्जेस फ्लो करते हैं और किस तरीके से हम इसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं. So जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी कि NPN transistor cannot be represented as two back-to-back connected diodes. So this is not a valid representation for a transistor operating in active mode. So active mode में हम just two back-to-back connected diodes के तौर पे BJT को मॉडल नहीं कर सकते. अगर हम इस तरह से मॉडल कर सकते होते तो फिर हमें इसे अलग से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं थी. हमने जस्ट इस तरह पीएन जंक्शंस को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, वही मेथडोलॉजी हम अप्लाई करते एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते. नोट करें कि अगर इस किस्म का डायोड सर्किट जो है इट डज नॉट फॉलो द ट्रांजिस्टर बेसिक ट्रांजिस्टर प्रिंसिपल. हियर दिस वोल्टेज अक्रॉस D1 कैन नॉट सेट द करंट थ्रू डायोड D2. इट्स नॉट पॉसिबल कि डायोड D1 के क्रॉस जो वोल्टेज है वो D2 के करंट को डिटरमिन कर सके, which is a basic transistor principle that the voltage between two of its terminals must be able to determine the current through the third terminal. So यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि this voltage VBE will basically determine this current IC. So the collector current IC is determined by VBE. तो VBE को आप बढ़ाते हैं तो IC बढ़ता है, VBE को आप कम करते हैं तो IC की वैल्यू भी कम हो जाती है. So VBE basically control the collector current IC. So the BJT cannot be modeled as merely two back-to-back connected diodes, as this structure is a transistor and the basic transistor principle is that the voltage between two of its terminals must be able to control the current through the third terminal. So let's see कि कैसे different है इस back-to-back कनेक्शन से. ये जो दो डायोड्स हमने बैक टू बैक कनेक्ट करके यहाँ पर इस्टेब्लिश किए, व्हाई दिस बीजेटी स्ट्रक्चर इन एक्टिव मोड बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम टू बैक टू बैक कनेक्टेड डायोड्स. तो यहाँ पर आप नोट करें हमने डिलिबरेटली यहाँ पर इस बीजेटी के सिंबल में हमने एमिटर की डोपिंग को N+ शो किए, विच मीन्स एमिटर इज स्ट्रॉन्गली डोप्ड relative to the base region and also relative to the N-type collector region. So the device is not symmetric. You can't use emitter and collector interchangeably. Emitter is strongly doped relative to base and collector. So let's see कि इसकी क्या reason है. So emitter based junction हम कह रहे हैं forward biased है. So emitter based junction is forward biased, and when emitter based junction is forward biased, so that means the barrier voltage across the junction is sufficiently low, so electrons in the N-type region has an opportunity to diffuse from N to P, while holes in the P-type region have the opportunity to diffuse from P to N. Forward bias region का ये मतलब है ना कि barrier voltage को आपने sufficiently low किया हुआ है, so diffusion allowed है for electrons from N to P and for holes from P to N. So electrons will start to diffuse from N to P and holes will start to diffuse from P to N. तो अगर ये इन दोनों की डोपिंग सिमिलर होती तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते फ्रॉम N to P while same number of holes would diffuse from P to N. However यहाँ पर चूंकि हमने इसको स्ट्रॉन्गली डोप किया हुआ है
n plus रखा हुआ है. So that means a large number of electrons for same forward voltage applied, a large number of electrons will diffuse from n-type emitter to p-type base, while a small number of holes will diffuse from p-type base to n plus emitter. So ये हमने इसलिए इंश्योर की है ताकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हों जब एमीटर बेस्ड जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस्ड है. सो अगर ये दोनों की सेम होती कॉन्सेंट्रेशन जिस तरह टिपिकली पीएन जंक्शन में होती है और उसमें आप इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं इस पीएन जंक्शन को, तो उस केस में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होते फ्रॉम एन टू पी, while same number of holes would have diffused from P to N. So इस सिचुएशन को हमने यहाँ पर चेंज कर दिया by ensuring के emitter is heavily doped. So emitter is heavily doped, a large number of free electrons are available here, and as soon as the emitter based junction becomes forward biased, these large number of electrons will start to diffuse from N to P, while a small number of holes will diffuse from P to N. So ये फिर बेस रीजन के इस स्टार्टिंग पॉइंट पे लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने अवेलेबल कर दिए. सो बेस रीजन आप नोट करें तो बेस रीजन इज अ पी टाइप रीजन. सो पी टाइप रीजन मींस दैट इट हैज अबंडेंस ऑफ होल्स एंड वाइल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, बट बाय इंश्योरिंग के एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड है अपने बेस के लोअर एंड के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव नाउ बिकम अवेलेबल. Since it's a p-type region, so initially the concentration of carriers was almost negligible there. Electrons की concentration यहाँ पर negligible थी, abundance of holes present थे. So because of the change in concentration between this lower end and this higher end of the base region, डिफ्यूजन का मैकेनिज्म यहाँ पर अकर करेगा. डिफ्यूजन आप रिकॉल करें, जो डिफ्यूजन करंट का मैकेनिज्म है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैरियर्स. And since there aren't many carriers present, electron carriers present in the p-type base region, so once you have made available a large number of electrons at the lower end of the base region, they will start to diffuse across the width of the base region. So ये width के across diffuse करना शुरू हो जाएंगे because of the diffusion mechanism in a semiconductor. So they will reach at this depletion region of CBJ. So ये इस depletion region में पहुंच जाएंगे. Since CBJ is reverse biased, so these electrons will diffuse across the width of the base region and will reach into this depletion region of CBJ. अब यहाँ पर देखिए क्या ये हमें पता है कि CBJ is reverse biased. So CBJ reverse biased है, इसमें एक electric field इस direction में applied है, which stops the majority carriers to diffuse across the junction. So majority carriers यहाँ पर stop हुए हैं. What about these electrons? ये पहले ये बताइए क्या electrons p type region में majority carriers हैं या minority carriers हैं? जी सॉरी सर माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे. माइनॉरिटी कैरियर्स है राइट. जिस तरह हमने लास्ट टाइम बात की थी, तो ये जो आपके CBJ के क्रॉस जो CBJ is reverse biased and the barrier voltage applied here is mainly stopping the majority carriers but is not stopping the minority carriers. Minority carriers के लिए ये aligned है in a direction के it will enable the flow of minority carriers across the reverse biased junction. So अब यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस किस्म की है. सो ये जो एन टाइप रीजन में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको ये स्टॉप कर रहा है कि वो एन से पी में ना जाए. लेकिन अब चूंकि हमने एज माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप बेस रीजन में ये इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, सो इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये बैरियर वोल्टेज इज नॉट स्टॉपिंग देम, एक्चुअली इट इज इनेबलिंग देम टू ड्रिफ्ट फ्रॉम पी टाइप बेस टू एन टाइप कलेक्टर. So electrons will experience the force because of this electric field and will immediately drift into the collector, forming the collector current. So this is how आपने देखा कि यहाँ पर आपको reverse bias junction के cross भी एक current मिल जाता है because of these minority carriers that you have introduced deliberately in the base region. So because of these minority carriers you get a current and this will form the collector current IC. And since electrons are negative and current electrons are flowing out of the collector terminal,
So the conventional current should be in the opposite direction because electrons are negative. So conventional current should be into the collector terminal. So IC आपके पास इस direction में आ जाएगा. So this is why we get some current here, and it's important कि यहाँ पर base has to be very thin. अगर base thin ना होती, base यहाँ पर thick होती, तो majority of these electrons introduced here will have recombined with the majority holes present and will tend to disappear and will not form the collector current. So that's why we tend to emphasize again and again that for proper operation of the BJT, the base has to be very thin. इसको एक दफा फिर से देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. So we are saying कि हम एक्टिव मोड की बात कर रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात कर रहे हैं, एक्टिव मोड की बात कर रहे हैं, which means emitter based junction is forward biased, collector based junction is reverse biased. So we are saying since emitter based junction is forward biased, the barrier voltage across the emitter based junction is sufficiently low, so electrons from n-type emitter have the opportunity to diffuse from emitter to base, while holes in the p-type base have the opportunity to diffuse from p to n. So device में we have made sure that the emitter is heavily doped, which means emitter has large number of electrons available relative to the number of holes present in the base region. So for the same level of forward voltage applied across the emitter base junction, a large number of electrons will diffuse across the junction from emitter to base, while small number of holes will diffuse from base to emitter. So ये आपका ये पहला स्टेप हो गया आपका because of the forward biased emitter base junction. नेक्स्ट स्टेप आपका ये है कि आपने चूंकि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेस के लोअर एंड पे अवेलेबल कर दिए, एंड बेस इज अ पी टाइप रीजन विद अबंडेंस ऑफ होल्स, जहाँ पर पहले से इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं थे. अब जब आपने एक एंड के ऊपर बेस के एक एंड के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल कर दिए और बाकी बेस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, so because of the change in concentration you will get a diffusion current. So electrons will start to move from lower end of the base region towards the upper end of the base region because of this change in electron concentration. Once they reach into this space charge region of collector base junction is reverse biased, and once they reach the space charge region of the collector base junction, they will immediately experience a force because of this applied electric field, since these electrons are minority carriers in the p-type region. So this barrier voltage is not a barrier for these for the minority carriers, so they will experience a drift and will immediately move into the collector region, forming the collector current. So ये आपके पास IC आ जाता है, which is the collector current. So you get the collector current here. जी इस फिगर को देखिए, ये हमने तीनों स्टेप्स यहाँ पर इस स्लाइड में पोर्ट्रे किया हुआ है. तो इसमें कोई क्वेश्चन हो तो बताइए. ये क्लियर है ऑपरेशन सबको? यस सर. ओके, सो हमने देखा कि ये this is because of the close proximity of the two p-n junctions. The p-n junctions are overlapping, that's why this sort of mechanism occurs. अगर ये यहाँ पर ये base बहुत thick हो, so these electrons most of them will recombine with the holes present in the base region and will tend to disappear, and as a consequence you won't get anything at the output. So because of this very close interaction between the two p-n junctions, the BJT operation is different than two back-to-back connected diodes. So back-to-back connected diodes में ये possibility नहीं थी, यहाँ पर ये possibility exist करती है. So ये भी उसी की सेम चीज़ को हमने दोबारा से यहाँ पर रिप्रेजेंट की है. बेस को हमने ज़रा जूम इन करके शो किया है ताकि हम देख सकें वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और इसकी बेसिस पे हम करंट की एक्सप्रेशन को निकाल सकें. सो वी आर सेइंग कि यहाँ पर द बेस विड्थ इज
W, इफेक्टिव बेस विड्थ जो है हमारे पास यहाँ पर W है. At the very start of the, since emitter base junction is forward biased, we have made a large number of electrons available at the very start of the base region. At x1 np of 0 electron concentration is available. At x2 जैसे जैसे electrons यहाँ पर इस end के पर base के दूसरे end पे पहुंचेंगे, they will experience a force because of the barrier voltage present here, and they will immediately drift into the collector, forming the collector current. So in other words, we are saying कि x2 के पर concentration of the electrons is 0. So electrons concentration at point x2 equals to 0, because any electron that reach at this depletion region of CBJ will immediately drift into the collector. So ये straight line representation है when you are ignoring the recombination effect, but there will be some recombination, and अगर आप recombination को भी consider करें तो you will get this concave curve. So ये जो concave curve हमने dashed line की शक्ल में show किया हुआ है, that is because of the recombination, and the straight line is when you are ignoring the recombination. So for simplification, let's use this straight line to derive an expression for the collector current IC. So let's see कि ये collector current की expression क्या आएगी. So पहली चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि at the very start of the base region at x1 you get a large concentration of electrons available, जिसको हमने np of 0 से denote किए. So np of 0 का मतलब ये कि electrons present in the p region at the very start of the base region. 0 indicates कि वो base का start है, या कह लें कि x1 है. So np of 0 must be proportional to exponential of VBE by VT. Why? Because ये एक forward bias PN junction की वजह से, और forward bias PN junction में हमने कहा था कि I is equal to IS exponential of VD by VT. So वो same चीज़, यानी current exponential के साथ relate करता है तो charges का flow भी exponential के साथ relate करना चाहिए. और यहाँ पर जो forward voltage है वो VBE है, because base is P type and emitter is N type. So the forward voltage is base to emitter voltage, VBE. So since these charges are available here because of the forward bias PN junction, the emitter base junction, so therefore the concentration must be proportional to the exponential relation, exponential of VBE divided by VT, where VT is the familiar thermal constant. Thermal voltage जो हम पहले भी लेके चलते आए. So we can introduce a proportionality constant here. Let's call it NP naught. So NP of 0 is equal to some proportionality constant times exponential of VBE by VT. So if you borrow the relation from semiconductor physics, we can find out that ये जो constant है, proportionality constant है, it can be given as Ni square divided by Na, where Ni is the intrinsic carrier density, that is, it's the number of free electrons and holes in a unit volume of intrinsic silicon. Intrinsic का मतलब होता है जब आपने उसकी डोपिंग नहीं की, तो जो भी आपका सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक हालत में है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स अवेलेबल हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिकॉज टेम्परेचर के साथ वो चेंज होंगे. सो दैट इज Na. Na इज द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इन द बेस. इसका मतलब ये है कि बेस में आपने कितने एक्सेप्टर आयंस की डोपिंग की है ताकि आपके पास कितने फ्री होल्स अवेलेबल है. सो Na इज द डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इन द बेस. VBE इज द फॉरवर्ड बेस एमिटर वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पर एमिटर जो है वो आपका N type है, base is P type, so this should be the polarity of the forward voltage, which is VBE. So VBE is the forward base emitter voltage. V capital T is the thermal voltage, वही familiar चीज़ है जो हम diodes की expressions में भी use करते आए हैं. And VT is, recall करें, VT is 25 millivolts at the room temperature. So room temperature में हम VT को 25 millivolts लेके चला करते थे. So अभी तक हमने एक बात की है कि since emitter base junction is forward biased, so at the very start of the base region
you get a concentration of electrons available, and that concentration of electrons must be proportional to this exponential relation, because that concentration of electron has become available because of a forward biased p-n junction. So NP of 0 must be proportional to exponential of VBE by VT. Since this current is because of the change in concentration, right? So this must be the diffusion current. So let's use the expression for diffusion current. We'll start with the expression for diffusion current density, because current density is more convenient to use. Just आप उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ मल्टीप्लाई करके किसी भी जंक्शन का एरिया निकाल सकते हैं. So current densities are preferred because then you can just multiply the cross-sectional area of a particular p-n junction and achieve the desired value of the current. So diffusion current density obviously is because of the diffusion. So diffusion current density must be proportional to the rate of change of carrier concentration. ठीक है, यही बेसिक डेफिनेशन है ना आपकी डिफ्यूजन की, कि वो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन की वजह से आती है. So the diffusion current density must be proportional to the rate of change of that carrier density. So dNp of x divided by dx. तो हम ये देख रहे हैं कि कैरियर की कॉन्सेंट्रेशन किस तरह चेंज हो रही है along the x डायरेक्शन. x के लॉन्ग जब कैरियर्स ट्रेवल कर रहे हैं तो डेंसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है. And there has to be a proportionality constant which is q times dn. Q is the magnitude of electron charge and dn is called the diffusion constant. So once you have determined this electron diffusion current density, you can readily determine the diffusion current by just multiplying the diffusion current density by the cross-sectional area capital AE of the base emitter junction. So cross-sectional area के साथ आप multiply कर दें तो you will get the current because of electrons. In is equal to Jn AE. So now we have a relation that we can use. So इसको हम अगर determine कर लें इस derivative को, तो then we can determine the value of this In. So ये derivative basically अगर आप graphically सोचें तो it is just slope of the straight line. ये जो straight line है हम इसकी अगर slope compute कर लें तो we are able to determine this derivative. तो यहाँ से ज़रा simple straight line की equation को use करके बताइए ज़रा क्या क्या आना चाहिए इसको. जी, what should be the value of this derivative? इस straight line की क्या slope है? -1 से नहीं, देखिए इसमें आपने बेसिक यूज करें ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. सो यहाँ पर ये वाले पॉइंट को ले लेते हैं हम x2 y2 और इस पॉइंट को x1 y1. जी अब बताइए क्या ख्याल है, यहाँ पर इस पॉइंट पे y2 की क्या वैल्यू है? सर इसकी स्लोप हो जाएगी -x1 ओवर विड्थ. x1 तो नहीं आएगा ना, यहाँ पर ये देखें इधर y की वैल्यू आपने रीड करनी है. सो 0 माइनस यहाँ पर y की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन है np ऑफ 0, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस पे हमने कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्लॉट की हुई है. सो 0 माइनस np ऑफ 0 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 विच इज द विड्थ, इफेक्टिव बेस विड्थ w. क्या ख्याल है, देखिए यही आना चाहिए, np ऑफ 0 डिवाइडेड बाय w. So let's make the substitution here. इस slope line, इस straight line की equation को यहाँ पर हम substitute करते हैं. ये जो slope हमने निकाली है dnp of x divided by dx में इसको put करते हैं. So we get In is equal to, In is the electron current, In is equal to some constant AeQdn times minus np of 0 divided by w. तो ये np of 0 आप रिकॉल करें तो ये हमने ऑलरेडी कहा था कि np of 0 must be proportional to exponential of VBE by VT, and there has to be some proportionality constant, call it np naught, exponential of VBE by VT. So let's make this substitution and get the final relation for the electron current.
सो NP ऑफ 0 की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने कहा था कि ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय Na होना चाहिए. सो In की फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाती है माइनस सम कांस्टेंट times exponential of VBE by VT. So initially this current was because of the forward bias PN junction, and then we get a diffusion mechanism, and as a consequence we get this electron current. So इसको हम इस constant को हम नाम दे देते हैं IS. So we have this final relation IN is equal to minus IS exponential of VBE by VT. So minus sign indicates it's an electron current. Minus sign indicates electron current. So we are saying electrons are flowing from emitter to collector, and the current is negative, which means कि अगर आप current की direction emitter to collector लेते हैं तो current is negative. So IN is negative means that we are saying कि current flowing from emitter to collector is negative. So अगर हम convenience के लिए positive current में deal करना चाहें तो then we can define the current in the opposite direction. So collector current को हम define करेंगे as we do for the conventional current. So conventional current हम किस तरह define करते हैं? When the carriers are negative, we say कि conventional current is in the opposite direction so that the current stays positive. So since electrons are flowing from emitter to collector, conventional current is from collector to emitter into the collector terminal. IS is called the saturation current, और उसका उसी किस्म का मीनिंग है जिस तरह हम डायोड में भी देखते आए हैं. सो लेट्स define the collector current as the current flowing into the collector terminal. So that means IC is equal to minus IN, or it is equal to IS exponential of VBE divided by VT. So we get the first relation here, which is for the collector current, IC is equal to IS exponential of VBE divided by VT. So IS की इफादियत उसी तरह ही है जिस तरह हम पहले भी देखते आए हैं डायोड्स के केस में. ये हम चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि बेस हैज़ टू बी थिन एंड लाइटली डोप्ड, ताकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेस थिन होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन्स कम से कम इलेक्ट्रॉन्स के पास अपॉर्चुनिटी हो टू रिकम्बाइन विद the holes present in the base region. Emitter has to be strongly doped ताकि whole current which is flowing from base to emitter उसका magnitude smaller हो relative to the electron current. So collector current के लिए हमने कहा कि collector current की expression is IC is equal to IS exponential of VBE divided by VT, where IS is the saturation current, और उसकी उसी किस्म का मीनिंग है जिस तरह का हम पहले भी देखते हैं डायोड्स के केस में भी. फ़र्क ये है कि डायोड के केस में जो पीएन जंक्शन आप स्टडी करते हैं इसमें IS में दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों का रोल आ रहा होता है. यहाँ पर कलेक्टर करंट इज ओनली कंप्राइज्ड ऑफ द इलेक्ट्रॉन करंट. सो दैट्स वाई यहाँ पर जस्ट वन टर्म है. अगर आप पीएन जंक्शन के लिए IS की एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यू विल गेट टू टर्म्स हेयर, वन बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर वन बिकॉज ऑफ the whole current. Again IS is a strong function of temperature, just like जिस तरह हम डायोड में भी देखा करते थे. IS is again here a strong function of temperature, and the similar rule of thumb is applicable here as well, that IS doubles for every 5 degrees centigrade rise in temperature. Just like जिस तरह हम डायोड्स के केस में भी कहते थे, ये वाला rule of thumb यूज करते थे हम कि the saturation current or the scale current IS doubles for every 5 degrees centigrade rise in temperature. So that rule is true for the BJT as well. So this is the first relation that we have, IS exponential of VBE divided by VT. Next हम IB के लिए relation निकालेंगे और IE के लिए relation निकालेंगे. So base current के लिए और एमिटर करंट के लिए नेक्स्ट हम रिलेशन निकालेंगे. लेट्स हैव अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हम इन रिलेशंस की तरफ आते हैं.